So students, there is yet another factor which is very important for the business is working capital requirements that decides its day-to-day requirement of the funds, and the factors that affect this requirement is 12 in number, and you can easily remember them as CC, NSG, CBI, PRESS. आप ऐसा याद कर सकते हैं कि देखो देखो CC, NSG, National Securities Guard, CBI, Central Bureau of Investigation, as well as press people are here on the spot. CCC, NSG, CBI, press. तो ये हैं 12 फैक्टर्स जो कि आपके इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को. नाउ क्रेडिट अलाउड एज फार एज दिस फैक्टर इज कंसर्न, जितना ज़्यादा हम क्रेडिट अलाउ करेंगे अपने कस्टमर्स को, यानी कि हम डेटर्स को बढ़ाते जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा हमें अपने बिजनेस में अपना पैसा डालने की ज़रूरत होगी. इसलिए अगर अलाउड का पीरियड बड़ा होगा, लंबा होगा, तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी. नाउ क्रेडिट अवेल्ड इज ऑन द वेरी ऑपोजिट टू दिस कॉन्सेप्ट. जितना ज़्यादा आप क्रेडिट अवेल कर पाएंगे, यानी अपने क्रेडिटर्स बढ़ाएंगे, उधार पे सामान लेंगे, ट्रेड क्रेडिट का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए वर्किंग कैपिटल खुद का लगाना कम पड़ेगा. नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द बिजनेस. अगर नेचर हमारा काफ़ी बड़े लेवल पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स अगर हैं, तो उनके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. नेचर यानी कि अगर लार्ज स्केल होगा, अगर हैवी इंडस्ट्रीज होगी, देन इट विल बी मोर वर्किंग कैपिटल will be required. Similarly, when we talk about scale, students, whenever there will be a large scale business, then definitely the working capital requirement will automatically go up. Next in point is the growth factor. Growth अगर ज़्यादा है business का, अगर growing stage में है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी बढ़ जाएगी. कंपटीशन का लेवल भी ऐसे डिसाइड होगा. अगर कंपटीशन ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा पैसे अपने लगाने पड़ेंगे मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, एंड ऑल द 4 P's अप्लाइड फॉर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सो दैट्स वाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल अगेन इंक्रीज इन दिस केस. नाउ एज फार एज बिजनेस साइकिल इज कंसर्न, स्टूडेंट्स, देयर कैन बी 2 phases. ईदर इट कैन बी इन द बूम फेज और इट कैन बी इन द डल फेज. और सो दिस विल ऑल्सो बी अ डिसाइडिंग फैक्टर. अगर बूम फेज में चल रहा है बिजनेस, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर बढ़ेगा, और अगर डल फेज चल रहा है बिजनेस के लिए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. नेक्स्ट इन लाइन इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज दैट आर टू बी परचेज्ड एंड यूज्ड फॉर द बिजनेस. तो अगर इन्फ्लेशन रेट हाई रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल यानी कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा टू मीट अप द सेम रिक्वायरमेंट्स फॉर द बिजनेस. Next in line is production cycle. Production cycle you can relate students with that of operating cycle. Operating cycle जहाँ पे raw material से बात शुरू होती है, फिर semi finished goods बनते हैं, फिर finished goods बनते हैं, then this finished goods goes to the market for sales, और sales से directly कई बार हमारे को पैसे नहीं मिल पाते, ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, और फिर जब वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन अगेन दैट कैश इज इन्वेस्टेड, री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, इनटू द रॉ मटेरियल्स. सो दिस साइकिल इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल. ये ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम या प्रोडक्शन साइकिल का टाइम जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही वर्किंग कैपिटल हमारी तरफ से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा रिटर्न होने में, सर्कुलेशन में आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है. सो मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंड. एज फार एज रॉ मटेरियल्स आर कंसर्न, स्टूडेंट्स, इफ there is easy availability of raw materials nearby, we can afford to not keep that much of inventory. But if the raw materials are available at a very after a very long period of time, then definitely more inventory will have to be kept by the business, and therefore the raw materials, if the availability time is more, अगर time इसको हम lead time भी बोलेंगे, सो लीड टाइम अगर बिजनेस का ज़्यादा होगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा टाइम पे मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ाना पड़ेगा फॉर रनिंग द बिजनेस स्मूथली एंड ऑन रेगुलर बेसिस. सिमिलरली एफिशिएंसी, इफ इट विल बी हायर, देन वर्किंग कैपिटल विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ lesser wastages, and if the efficiency on the part of workers will be lesser, then wastages will be more, and there will be more requirement for the capital in the business. Last factor is the seasonal factor, students. Seasons can be the peak season, or it can be a lean season. When the season is peak, then working capital requirement increases. On the other hand, when there is a dull season or lean season or slack season for the business, then automatically the working capital requirements will go down. So this way, students, you are supposed to remember the factors affecting working capital. Can easily be remembered as देखो देखो, CC, NSG, National Security Guard, Central Bureau of Investigation, and press people. All are here. CC, NSG, CBI, press. These are the 12 factors, and always remember that nothing you have to write extra in the explanation of these factors. Just show that how this particular factor is affecting the requirement for the
working capital. So students, yet another factor that is affecting fixed capital requirements of the firm are also important from exam point of view, and they are 8 in numbers, as you can see. Again, an acronym for this: NSG CF Limited. CF Limited, you can remember it as a company, and NSG are the same points as we have discussed in the working capital requirement. So when the nature of the business is of heavy nature in heavy industries like manufacturing concerns, then automatically the fixed capital requirement for the business will go up. Similarly, when the business is running on a larger scale, then higher the scale of the business, the more will be the requirements for the working capital. If the growth aspects are more for the business, again the investments in the capital assets of the company will be increasing, fixed capital requirements of the company will also increase. Collaboration, with this word we mean students, that how the two companies, or we can say the two firms, are contacting each others and they are able to utilize each other's facilities for the business. If there is high degree of collaboration between the two business, automatically the fixed capital requirement of one type of business will go down. So this is another factor called finance. Financing facilities, if they are easily available like loans and for the business, then automatically, like if we have to purchase a big asset in the house, suppose let us if we are planning to buy an iPhone and we can't spend 1 lakh or more than that amount in the phone at once, so we can go for loan facility, the finance facility, and if that is available, then we can just convert the huge amount into installments. Same goes with the company, so that finance ability, if it is more, then fixed capital requirement of one time investment will go down, because it can be bought on hire purchase system, or maybe a little amount of down payment along with the equated monthly installments. Now if we talk about the lease facility, students, when the lease are available, like with lease we mean the rent facilities are available for the purchase of assets, then rather than going for purchase, we'll go for leasing the asset and paying rent for it. A regular outflow of expense will be there, but the lump sum amount of expense will not have to be done. So fixed capital requirement will go down if in case the rent facility is higher. Techniques, this depends on the two techniques of like labor intensive or capital intensive. If the business is running on capital intensive technique, then fixed capital requirement will go up, and if it is running on the labor intensive technique, this particular technique will reduce the deployment of funds in the terms of fixed capital. Last but never the least, diversification. If the business is trying to diversify or convert its into various product lines or maybe into branches, then high degree of diversification will also lead to higher outflow of the fixed capital from the business in order to expand and grow in size. So I hope all the factors of affecting the fixed capital requirements of the firm are very clear to you. Just remember that they are 8 in number.